Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. In this video, I will explain what is the purpose of writing an informal letter, and also I will explain in detail how to write an informal letter. In the end, I have given two solved examples of informal letter, so stay tuned. So now let's begin. So what is the purpose of writing an informal letter? Informal letters are mainly used for personal communication. इनफॉर्मल लेटर पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लिखे जाते हैं और इसमें पर्सनल टोन का यूज़ होता है. इनफॉर्मल लेटर कैन बी रिटन एज पर द राइटर्स विशेज़ एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. राइटर के विशेज़ एंड सिचुएशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर. So the letter is written in a personal fashion in casual unassuming language. ये तो आप सबको पता ही होगा कि इनफॉर्मल लेटर हम फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो ये लेटर पर्सनल टोन में लिख सकते हैं और कैजुअल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. You must have seen my video of informal letter writing. If not, then check it out. Link is given in the description box. This is the format of informal letter writing. ये format accurately use करें जब भी informal letter लिखें. और लास्ट वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज थी कि रिसीवर्स एड्रेस क्यों नहीं आता. पहले हम रिसीवर्स एड्रेस लिखा करते थे, बट अब फॉर्मेट चेंज हो गया है और अब रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तब ऑब्वियसली सेंडर को पता है कि रिसीवर कौन है और लेटर रिसीवर ही पढ़ेगा, तो रिसीवर्स एड्रेस लिखना इररेलेवेंट है. इसलिए हम रिसीवर्स एड्रेस इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखते. Now I will tell you in detail about the format of informal letter. First of all comes the sender's address. We usually write the address on the left hand side of the page. एड्रेस एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए एंड ऑल्सो इट शुड बी रिटन इन 2 to 3 लाइन्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही लाइन में आपने एड्रेस लिख दिया. इवन जब आप लेटर अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो एड्रेस प्रॉपर लिखना, ताकि वो इजीली आपको रिप्लाई बैक कर सकें. आफ्टर सेंडर्स एड्रेस लीव वन लाइन एंड राइट द डेट. डेट अलाउज द रीडर to have a reference as to when the address was written. डेट से पता चल जाता है कि ये लेटर कब लिखा गया है. आफ्टर डेट लीव वन लाइन एंड राइट सैल्यूटेशन और यू कैन से ग्रीटिंग, दैट इज़ डियर XYZ, मतलब जो भी रिसीवर है उसका नेम. Now, since you know the person you are writing to, the greeting can be informal as well. Informal letter में greeting personal भी हो सकता है, क्योंकि हम informal letter अपने friends, family या relatives को ही लिखते हैं. If you are writing to your friend or someone close to your age, you can greet them by their first name like Dear Alex. And if you are writing to your relative like your mother or father or aunt or uncle, then you may greet them like Dear Mom, Dear Dad. एंड इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर पर्सन जिसको आपने रिस्पेक्ट देनी है, देन ऐड मिस्टर और मिसेज, लाइक राइट डियर मिसेज एलेक्स. आफ्टर सैल्यूटेशन कम्स द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पूरे लेटर की टोन सेट करता है. ऑल्सो यू माइट बिगिन बाय आस्किंग द रिसीवर अबाउट हिज और हर वेल बींग, और यू मे से दैट होप द लेटर फाइंड्स देम इन गुड हेल्थ एंड ग्रेट स्पिरिट्स. इनफॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग कैजुअल एंड कंफर्टिंग होनी चाहिए. बिजनेस लेटर्स की तरह फॉर्मल और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ मत करना. After introductory paragraph comes the main body of the letter, in which you have to describe everything according to the topic. The letter overall should maintain a friendly tone, but you have to adjust the language and the wordings according to who you are writing to. अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो कैजुअल टोन में लिख सकते हैं, बट अगर आप अपने किसी एल्डर रिलेटिव को लिख रहे हो तो तब आपको रिस्पेक्टफुल टोन में लिखना होगा. आफ्टर द बॉडी ऑफ द लेटर कम्स द कंक्लूजन. कंक्लूसिव पैराग्राफ सम अप होता है जो भी आपने पूरे लेटर में लिखा उसका. दैट इज समराइज द लेटर इन कंक्लूजन. Say a meaningful and affectionate goodbye to the reader, and do not forget to invite the reader to write back or reply to your letter. It shows an intention to keep the conversation going.
Then in the end comes the signature or you can say the complimentary closing. इनफॉर्मल लेटर की एंडिंग करने का कोई भी एक तरीका नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता एंडिंग करने का इनफॉर्मल लेटर में। जैसा आपका मन करे वैसे साइन ऑफ करो। सम कॉमनली यूज्ड phrases are lots of love, best wishes, kind regards, kindly, yours lovingly. All these can be used to sign off your letter. And after complimentary closing comes the name or signature of the sender. So this was the format of informal letter writing. I hope अब आपको और कोई doubt नहीं होगा. Now look at the solved examples of informal letter writing. First question is, you are Mahima or Jaspreet, a resident of Lodi Road, New Delhi. Write a letter to your younger brother Tanmay, convincing him that if he wants to build a good career for himself, then he should leave all the things that are distracting him from his goal and suggest him to focus on his studies only. So basically ये letter अपने young brother तन्मय को लिखना है और उसे कन्विंस करना है कि अगर अच्छा करियर बनाना है तो स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करे और बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होए. So now let's begin with the letter. First of all comes the sender's address, that is ABC Apartments, Lodi Road, New Delhi. Then after one line comes the date, that is 19th February 2021. After date comes the salutation, that is Dear Tanmay. And then comes the main content. It has been a while since I have heard from you. How have you been? I hope this letter finds you in the best of your health and cheerful spirits. Recently, I came to know about poor performance in your examinations from Dad. He was concerned about your studies and career. I know you are an ambitious child. You have always made us proud, but your recent response has not been satisfying. Nowadays, you are spotted in a company which is neither good for you nor for your future. Tanmay, you should know that time going now is the most crucial time regarding your future. If you are distracted now by any means like your recent online game addiction, you are killing your time and destroying your shining future. I know you are a responsible being. You should analyze the ongoing situation. Our parents have invested their lives to see us successful. I hope you will take the right decision as this concerns not only you but also the people belonging to you. Hope to see you soon. Yours lovingly, Mahima. Now next question is, write a letter to your friend congratulating him or her on his or her success in class 12th board exam. ये लेटर अपने फ्रेंड को लिखना है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी सक्सेस पे कि उसने अच्छा स्कोर किया है अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स में. So now let's begin with the letter. First of all comes the sender's address, that is B/32 Sector 11 Rohini, New Delhi 110034. Then after one line comes the date, that is 10th July 2020. After date comes the salutation, that is Dear Muskan. And then comes the main content. My happiness knew no bounds when I got to know that you have topped your school and achieved your dream. I felt so pleased that I wish I was there to congratulate you personally. The result has proved that hard work, determination, and perseverance bring good results. You were so laborious and passionate about it. I know you were very nervous too, but I was always very confident that you would come out with flying colors. I apologize that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes. Hope to see you soon. Please be encouraged and continue your hard work. Your future is very bright. My parents and elder sister have sent lots of love and heartiest congratulations. With lots of love and best wishes, yours lovingly, Shefali. So this was all about informal letter writing. I hope it is clear. I will discuss some other topic in my next video. So till then, stay tuned and please subscribe to my channel. And also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Thank you.